Hello, Vacho. Let's see this question. The question says, in an attempted determination of the solubility product constant of TL2S, the solubility of the pure compound in CO2 free water was determined. इसकी solubility value दी गई. Assume that dissolved sulfide hydrolyzes almost complete to HS minus and the further hydrolysis to H2S can be neglected. What is the computed KSP? तो हमें यहाँ पर KSP की value बतानी है. तो KL की AL की value and KA2 की value दी गई. दिस Ka1 एंड Ka2 रिस्पेक्टिवली. तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं. फर्स्ट रिएक्शन लिख लेते हैं. TL2S इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2TL प्लस S पावर -2. तो इसकी KSP लिखे तो कंसंट्रेशन ऑफ TL प्लस की होल स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ S -2. तो यहाँ पर TL प्लस की कंसंट्रेशन अगर लिखें that will be equal to 2 into इसकी solubility 2.0 into 10 power -6 molar. Next comes S power 2 minus की concentration that would be equal to 2.0 into 10 power -6 molar. तो यहाँ पर HS minus की अगर देखें that would be equal to S power -2 and S power -2. So this will be equal to 2.0 into 10 power -6 की whole square. तो KSP will be equal to 2.0 into 10 power -6 whole square multiplied with concentration that is 2 into 2.0 into 10 power -6 whole square होगी. तो यहाँ पर तो फाइनल KSP इसे कैलकुलेट करने पर हमें मिल जाएगा 6.4 into 10 power -23. So this is the required KSP. That is option A is the correct answer. I hope you understand it well. All the best.